We're getting some breaking inputs. Pakistan has started firing after we eliminated an infiltration camp in Karen sector. Okay, so this is, I believe, coming in from Karen sector of Poonch. Today morning, inputs are suggesting that, in fact, in the Karen sector today morning, inputs are suggesting so far 6 to 7 Pakistani army soldiers have been killed in retaliation and 10 to 12 injured in addition. And a number of Pakistan army bunkers, fuel dumps and launch pads have been destroyed and set on fire. This is, in fact, a big breakthrough for our security forces in response to unprovoked border aggression shown by Pakistan. Sri Raghav is joining us on phone line with more updates. Heavy casualties, in fact, inflicted on the Pakistani side. That's huge. Can you hear us, Sri Raghav? Okay, let's try and reconnect our colleague, our correspondent. But let's tell you, Pakistan, in retaliation to unprovoked Pakistani aggression. Sri Raghav bol rahi hai yaar. Okay, we'll try and go back to him. But let's, before we move on to the next story, tell our viewers what about this breaking input. Pakistan, in fact, the breaking input that we are getting in from Karen sector in LOC is that our forces have eliminated an infiltration attempt in Karen sector. This is a huge news in terms, this has happened reportedly in the morning today. Initial inputs are suggesting as far as, okay, these are the visuals, how our forces completely neutralized and demolished enemy bunkers on the other side of the border. What we can tell our viewers, 6 to 7 Pakistani army soldiers have been neutralized. Sudhir Yadav is joining us on phone line with more inputs. Sudhir, this is a massive breakthrough for our forces. बिल्कुल से कल देखिए, आज सुबह की घटना है। आज सुबह जब एक इन्फिल्ट्रेशन बिट को जो भारतीय सेना है उसने नाकाम बना दिया था, उसके बाद से नॉर्थ कश्मीर में जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हो रहा था और काफी जो गोलाबारी जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, उसी के जवाब में भारतीय सेना ने अपनी तरफ से जो गोलीबारी है उसका जवाब दिया है। और उसमें जो इनपुट हमें मिल रहा है उसमें 6 से 7 पाकिस्तानी आर्मी जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं, जिसमें एसएसजी के 2 कमांडो भी हैं और करीब 10 से 12 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं सेना की। तो बिल्कुल ये अपने आप में काफी जो करारा जवाब है भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है। इसमें जो पाकिस्तानी आर्मी के बंकर्स हैं, फ्यूल डंप्स हैं और जो लॉन्च पैड हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। सकल भारतीय सेना की ये जवाबी कार्रवाई है। जब भारतीय सेना ने जो एक इन्फिल्ट्रेशन बिट थी उसको फॉइल कर दिया, तब पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी की गई उसको सपोर्टिव रोल देने के लिए। और उसके जवाब में भारतीय सेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो उनके लॉन्च पैड्स हैं, जो आर्मी के बंकर्स हैं, फ्यूल डंप्स हैं, उनको निशाना बनाकर फायरिंग की और उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। उसमें करीब से करीब 6 से 7 जवान, जो हमें अभी सोर्स के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसमें 6 से 7 जो पाकिस्तानी आर्मी के जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। एसएसजी के 2 कमांडोज उसमें शामिल हैं और करीब 10 से 12 जो सेना के जवान हैं पाकिस्तानी सेना के, वो इसमें घायल हुए हैं। Yes, Sudhir, please stay with us. Let's once again update our viewers on the screens. You can see these are the visuals of the extent of demolition, the extent of destruction inflicted on the other side of the border, on the Pakistan side of the border. It's seen as a massive and strong retaliation by the Indian forces, by Indian side, in response to unprovoked border aggression. If I can go back to Sudhir very quickly. Sudhir, what more are you picking up? Could the numbers really grow up? Because what we do know reportedly, as you just mentioned a while back, 10 to 12 of their soldiers have been injured, and 6 to 7 Pakistani army soldiers have already been neutralized. And not to forget, Pakistani army bunkers, viewers, Pakistani fuel dumps as well as the launch pads have been set on fire by our forces. Sudeep. बिल्कुल सकल देखिए, आज सुबह की घटना है। आज सुबह जब भारतीय सेना ने जो आर्मी जो इन्फिल्ट्रेशन बिट था उसको फॉइल किया, तो उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से लगातार दावर, केरन, उरी, नौगांव, ये सारे जो सेक्टर्स थे वहां मोर्टार के जरिए और जो हैवी वेपनरी थी उनके जरिए डेलिबरेटली जो टारगेटेड अटैक्स जो सिविलियन एरियाज में किए जा रहे थे वो किए जा रहे थे। उसको देखते हुए भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और बिल्कुल उस जवाबी कार्रवाई में जो हमें जानकारी अभी तक मिल रही है उसमें यह है कि 6 से 7 जवान मारे गए। और अभी माना यह जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स हमें मिल रहे हैं, जिस तरह की
जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं उसमें माना यह जा रहा है कि ये जो संख्या है वो बढ़ सकती है। जो 10 से 12 जो इंजर्ड जो पाकिस्तानी सेना के जवान है, ये संख्या और आगे बढ़ सकती है। अभी तक लेकिन सकल ये कहेंगे बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई है। पाकिस्तान जो लगातार सीजफायर वायलेशंस का उल्लंघन करता रहता था, और चूंकि इस बार दिवाली के मौके पर, बिल्कुल दिवाली से ठीक पहले की बात करें, इस तरह की कार्रवाई की गई, तो भारतीय सेना की तरफ से एक करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। ये उसके लिए बिल्कुल एक हमारे दिवाली के त्योहार के पहले कहें करारा सबक होगा कि जो भारतीय सिविलियन एरिया है जो एलओसी के पास, उनमें जो सीजफायर वायलेशंस है उनको करना वो बंद करें। So let's also, Sudhir, let's get it very clear. This was India's response to their infiltration bid early in the morning, and this has happened, viewers, along LOC in Karen sector. And on your screens, you can see the exact, we've marked that location for our viewers. In fact, the fumes that you see in the air, viewers, this is when our soldiers retaliated to Pakistan's unprovoked border aggression along LOC in Karen sector. Reportedly, Pakistani army bunkers have been demolished, fuel dumps have been demolished, their launch pads have been destroyed. Sudhir, what more are you picking up from the Karen sector as we speak? This reportedly happened in the morning today. The numbers as far as the destruction on the other side, the numbers as far as their side of the loss is concerned, Pakistani soldiers, 6 to 7. But is it likely to go up? Is it a developing situation, or more or less the situation has been brought under control along LOC in Karen? बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई कर दी गई। मैं सकल पूरी घटना आपको बताता हूं। देखिए आज सुबह की बात करें, एक सस्पिशियस मूवमेंट था जो भारतीय सेना की तरफ से जो कैरन सेक्टर है उसमें जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां देखा गया था, और उसको जो इन्फिल्ट्रेशन बेल्ट उधर से बेल्ट जो थी वो कोशिश की जा रही थी, घुसपैठ की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय इलाके में, उसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से लगातार एलओसी से जो मल्टीपल सेक्टर्स में है, डावर, केरन, उरी, नौगांव, इन सब में मोटार और हैवी वेपनरीज के जरिए लगातार जो सिविलियन एरिया थे उनको अटैक करके, उनको टारगेट करके फायरिंग की जा रही थी। तो इसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। भारतीय सेना की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय सेना ने जो पाकिस्तानी सीजफायर वायलेशन था उसका करारा जवाब दिया। उसी के जवाब जब भारतीय सेना ने पूरी ये कार्रवाई की है, तो भारतीय सेना ने जो उसके पाकिस्तानी सेना के जो बंकर्स थे, जो फ्यूल डम्प थे, जो लॉन्च पैड थे, उनको टारगेट लेकर निशाना बनाकर जो जवाबी गोलाबारी की है, उसमें हम विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो फ्यूल डम्प हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, आर्मी के बंकर्स नष्ट हुए हैं, और जो लॉन्च पैड हैं उनको भी बिल्कुल पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिली कि अभी की जो जानकारी है कि 6 से 7 जो पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स हैं वो इसमें मारे गए और 10 से 12 घायल हुए। तो ये नंबर हालांकि बढ़ सकता है। ये भारत की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई थी। ये बहुत जरूरी है ये समझना, सुधीर, जो आप बता रहे हैं। 6 से 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स का खात्मा, और उससे बड़ी खबर ये भी है जो आप बता रहे हैं कि आर्मी बंकर्स जो है पाकिस्तान के केरन सेक्टर के उस तरफ की ओर, लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। क्या वहां पे अभी एलओसी केरन में अभी की स्थिति कैसी है? इज इट अंडर कंट्रोल नाउ? बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना की तरफ से स्थिति पूरी तरह से वैसे ही कंट्रोल है, क्योंकि जो सस्पिशियस मूवमेंट था भारतीय सेना ने पहले उसको नाकाम कर दिया। फिर जो सीज फायर वायलेशन जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, बहुत हैवी मोटार और हैवी वेपनरीज के जरिए आ रहे थे, उनका जवाब दिया गया। बिल्कुल सकल आपने साफ तौर पर कहा, ये व्यूअर्स को क्लियर होना चाहिए, सभी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भारतीय सेना कभी भी अपनी तरफ से कोई सावे वाली कार्रवाई नहीं करती। हमेशा जब भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन किया जाता है उसका जवाब जो है भारतीय सेना देती है। और आज भी जब मल्टीपल सेक्टर्स में पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन है उनका उल्लंघन किया गया, उसकी जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें ये जो पाकिस्तानी बंकर्स, पाकिस्तानी सेना के जो बंकर्स हैं, लॉन्च पैड्स हैं और जो फ्यूल डम्प्स हैं, वो पूरी तरह से नेस्त नाबूद किए गए हैं। और अभी जो कार्रवाई है वो की जा चुकी है। लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना कुछ और सीज फायर वायलेशंस करती है या कुछ और दुस्साहस करने की कोशिश करती है, तो भारतीय सेना उसका भी जवाबी तौर पर पूरा जवाब देगी। बिल्कुल। और सुधीर, ये टाइमिंग्स यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना हमारे दर्शकों के लिए। जब पाकिस्तान को लगा कि हिंदुस्तान में दिवाली का माहौल है, ये एक अच्छा मौका है इन्फिल्ट्रेशन बिड का, घुसपैठ करने का, और ऐसे मौके पे इतना करारा जवाब उनके 6 से 7 जो उनके सोल्जर्स है, उनके फौजी है, अभी तक ढेर हो चुके हैं। और क्या कुछ इनपुट्स आपको मिल पा रहे हैं? कैजुअलिटी नंबर्स ऑन द अदर साइड इज लाइकली टू गो अप, बट दिस अटेम्प्ट during the festive time in India only exposes Pakistan further.
बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से सकल जो हमें जानकारी दी गई उसमें साफ तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश ये की गई थी कि जो त्योहार का सीजन दीपावली से पहले, तो जाहिर तौर पर जो जवान होंगे वो तैयारियों में होंगे, फेस्टिवल सीजन की चीजों में, और जो त्योहार का एक माहौल जाहिर तौर पर भारतीय सेना जो सभी धर्मों के साथ मिलकर एक मनाती है उसको वो रहा होगा। तो लेकिन उनकी गलती थी, भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह से चाक चौबंद है, और जो सस्पिशियस मूवमेंट था वो भारतीय सेना ने तुरंत उसको पकड़ लिया, उसको पहले मॉनिटर किया गया और जैसे ही वो रेंज में आए उनको बिल्कुल नाकाम कर दिया गया। तो ये पहला एक्शन भारतीय सेना की तरफ से रहा। जब इस एक्शन के बदले जब पाकिस्तान की हताशा नजर आई कि उसने कोशिश की थी कि इन सब लोगों को जो आतंकवादी हैं उनको भारतीय सीमा में घुसपैठ करा दी जाए, जब वो नाकाम रहे तो हताशा में उसने जो हमारे जो सिविलियन इलाके थे उनको टारगेटेड करके उसने जी, मोर्टार इस और बीच भारतीय सेना वेपनरी के से 3 जवान भी शहीद हो चुके हैं। 3 Indian soldiers, in fact, have also attained martyrdom in this the infiltration attempt bid by Pakistani side. This has happened in Keren sector in LOC at Poonch this morning. 6 to 7 Pakistani army soldiers have been reportedly killed by our forces, leaving 10 to 12 of them injured. As far as our side is concerned, 3 of our Jawans have attained martyrdom. And Pakistani bunkers, Pakistani fuel dumps and launch pads have also been heavily demolished and destroyed. Viewers, this is going to be our top story. We're going to keep sharp focus on this. Meanwhile, we need to slip into a very short break. On the other side, we'll have more news and updates. It's going to be a top story on DD News. Please stay with us. Okay, we will continue our broadcast and stay on these visuals, and I think Sudhir is with us. Sudhir, if you can talk a little bit more in this process. 3 of our soldiers, at least 3 of our soldiers have attained martyrdom. What more information can you share? देखिए, सोर्सेज से हवाले से अभी तक हमें जो पूरी जानकारी दी गई है, जिस तरह की, जैसा मैंने आपको कल बताया कि सुबह से ये डेवलपिंग जो घटना है वो सुबह की पहले पाकिस्तान की तरफ से वे जो आतंकवादी थे उनको घुसपैठ कराने की कोशिश की गई। जब वो घुसपैठ भारतीय सेना ने पकड़ ली, इसको नाकाम कर दिया, तो हताशा में उसने सिविलियन एरियाज थे उनमें टारगेटेड करके मल्टीपल जगह फायरिंग शुरू कर दी। और जब ये घटना चूंकि ठीक त्योहार से पहले हुई, तो भारतीय सेना ने इसका जवाबी कार्रवाई जो की, उसमें हम देख सकते हैं कि जो लॉन्च पैड्स हैं, आर्मी के बंकर्स हैं और फ्यूल डम्प्स हैं, वो हालांकि उसमें पूरी तरह से नष्ट हुए। और जानकारी जो अभी तक हमें सूत्रों के हवाले से दी गई है कि उसमें जो 6 से 7 जो है आर्मी जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं वो मारे गए हैं और करीब 10 से 12 जो हैं वो घायल हैं। हालांकि इसमें से ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो 10 से 12 जवान हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं या किस तरीके से हैं। लेकिन जाहिर है जिस तरीके से जो विजुअल्स हैं उसमें दिख रहा है जिस तरीके से भारतीय सेना की जो जवाबी कार्रवाई रही है, तो जाहिर तौर पर ये जो नंबर है आगे बढ़ सकता है। इसमें अभी जो सूत्रों के हवाले से आपने बताया कि हमें जानकारी मिली कि हमारे 3 भारतीय सेना के जवान है उन्होंने सर्वोच्च अपना बलिदान दिया है। और अभी की बात अगर हम करें तो अभी सकल जो स्थिति भारतीय सेना की तरफ से हम कहें वो अंडर कंट्रोल है, पूरी तरह से भारतीय सेना है वो उसका जवाब दे सकती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से सकल हमें ये भी जानकारी दी गई कि अगर जो सीजफायर वायलेशन की कंडीशन पाकिस्तान दोबारा से इनको इनिशिएट करता है या फिर और किसी सेक्टर्स में दोबारा से सीजफायर वायलेशंस की कोशिश करता है, तो भारतीय सेना उसका पूरी तरह से माकूल जो जवाब है एक वीक के अंतराल में ये सेकंड इन्फिल्ट्रेशन बिड है पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यहाँ से निकल के आ रही है, कम से कम 6 से 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स को ढेर किया है हमारे जांबाज सिपाहियों ने। आर्मी के बंकर्स, दर्शकों को हम वो विजुअल्स, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये केरन सेक्टर की है। सुधीर, देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स सजेस्टिंग दैट this was an infiltration bid attempted by Pakistani, as you mentioned, Pakistani side early in the morning today. And remember, this is that time of the year when the infiltration attempts by the Pakistani forces, winter season approaching, there's a pattern to it. There is a pattern to it, and these visuals, viewers, actually explain the extent of damage, the extent of destruction inflicted by our soldiers on the Pakistani side. Sudhir. अब बिल्कुल देखिए सकल एक पैटर्न बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि जो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स का जो एक पैटर्न जरूर है कि जब भी पाकिस्तान मौसम खराब होता है
या सर्दियां होती हैं या एलओसी के पास Yes. विजिबिलिटी जो कम होती है, ऐसी वक्त पर जरूर कोशिश करता है कि जो आतंकवादी हैं उनको भारतीय सीमा में किसी तरीके से जी। दाखिल करा दिया जाए। और पैटर्न ये भी साफ तौर पर है कि कई बार पाकिस्तान जो है इन्फिल्ट्रेशन विद पहले हैवी फायरिंग देता है। But Pakistan refuses to learn any lessons. My colleague Nandita is with us. Sudhir, I request you to stay with us. Nandita, over to you. What more are you picking up from your sources in Indian Army? And in the process, reportedly, 3 Jawans have attained martyrdom, but their supreme sacrifice will never ever go waste. Nandita. Nandita? Let's try and connect. Yes, Nandita, are you there? We'll try and reconnect with Nandita and Sudhir. If Sudhir is there, Sudhir, kindly, we were talking about the martyrdom attained by our 3 soldiers at least. What more information can you share with our viewers on those lines? अभी जो जानकारी जिस तरीके की शक्ल आ रही है, क्योंकि ये सुबह की घटना है तो चीजें अभी पूरी तरह से जो हम कहें पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। सोर्सेज के हवाले से ये सारी जानकारी जो है वो निकल कर आई है। जिस तरीके से जो 3 हमारे जवान है उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन खास बात शक्ल ये जरूर रही है जिस तरीके से भारतीय सेना ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए जिस तरीके से खास तौर पर क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता रहा था शक्ल की एक जो पैटर्न रहता है पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से कि जब भी मौसम खराब होगा या उस इलाके में विजिबिलिटी कम होगी या बहुत ज्यादा बर्फबारी अगर उस इलाके में हो रही है तो पाकिस्तान हमेशा से ये कोशिश करता है कि इन कंडीशंस का फायदा उठाकर वो जो कुछ आतंकवादी हैं वो भारतीय सीमा में दाखिल करा दे, जो यहाँ गड़बड़ी या कुछ जो दूसरी हिंसक घटना है उसको अंजाम दे सके। ये लगातार उसकी कोशिशें रहती है और इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से जब ये आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो या तो उससे पहले और कई बार उससे घुसने के बाद भी लगातार उनको कवर फायरिंग दी जाती है, जिससे कि भारतीय सेना का ध्यान जो है वो पाकिस्तान की जो कवर फायरिंग है उनकी तरफ चला जाए और उस दौरान ये आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल हो सके। Sudhir, stay with us. Nandita, our colleague, is there. Sudhir, you also stay with us. We stay with the visuals as Nandita joins us with more information. Nandita, earlier we also saw some unsuccessful infiltrations bid in Machal sector. This happened on 7th and 8th. And today this, but heavy injuries inflicted on their side. Nandita, what more information can you share? Yes, Sakal, actually we are seeing a pattern here that every time before Diwali, and we have been seeing it since 2013 onwards and 13-14 onwards, that Pakistan always resorts to heavy firing, mortar shelling, always during this period, that is this Diwali period, and that is because the main motive of this is that because before the winter, the passes closed down due to the snowing in, they want to infiltrate as many terrorists and mercenaries as they can. And now, as it is getting colder, and as you saw in Gurez and Uri, the passes are going to close down soon. Uri is also the place which they have targeted before in 2016 also, and in the response to which we conducted the surgical strikes. But it is pertinent to mention here, Sakal, that Indian Army also gives a befitting reply and pays them back in the same coin. Not only that, Sakal, even before events such as New Year, Diwali, even when there is an India-Pakistan cricket match or a India-Pakistan hockey match on, we see this Pakistanis resorting to shelling and firing, and this time they've also killed civilians. This is not the first time. This is a pattern, and it seems that the Pakistani army is trying to is under the misperception or is under but the Nandita, yes, let's also focus on the scale and extent of damage inflicted on the other side. Heavy bunkers destroyed. Pakistani launch pads have been completely demolished. Nandita. Yes, that is because the Pakistanis need to be taught a lesson, and the Indian Army tells them time and again that it is a thing of diminishing returns. If they target it, they would get more pain inflicted on them. This time, heavy bunkers, and we are hearing that many casualties have taken place. The Indian Army, of course, cannot confirm the number of casualties, but as the hours pass, the days pass,
We pick up chatter. The Indian Army picks up chatter on the phone lines and intercepts conversations, and through its own intelligence informers in that area finds out how many Pakistani casualties are there. Also, at the same time, Sakal, we must understand that Pakistan is in the business of not letting people know how many casualties. Just like China hid its Security expert Alok Bansal is with us. Nandita and Sudhir requesting you to stay with us. We stay with those visuals. And Mr. Bansal, these visuals speak louder than words. The extent of damage that has been inflicted on the Pakistani side this time around. Though we have lost our three Jawans have attained martyrdom. But as always, their supreme sacrifice will never go wasted. Do you see a pattern here? Because in Machal sector, just few days back, we saw a similar infiltration bid. Sir, Mr. Bansal. See, Pakistan has been trying to infiltrate because they realize that this is the last window of infiltration, and that's why I think they're building up the pressure for infiltration. But security forces have given them a befitting reply and have inflicted immense damage on this, as you have already shown. So I hope with this sort of a lesson that Pakistan is going to learn, I think they would now desist from this sort of an infiltration bid. But this is an attempt, a desperate attempt by Pakistan to create turbulence within the valley, because they know that the winter is fast approaching. In fact, winter has already arrived, and very soon the passes or mountain passes will close down and their ability to infiltrate will completely shut down. So before that, I think they're making these desperate attempts. And I think all these attempts of ceasefire violations are basically to divert attention of the security forces so that infiltrators could. What we can also, Mr. Bansal, share with our viewers, sir, as you also pointed out, a desperate attempt by Pakistan to alter the status quo in terms of, you know, these civilian pockets that are always vulnerable to such infiltration bid. Pakistani army deliberately targeted civilian areas this time around once again in Devar, Keran and Uri in Nogam sector along LOC. Again, there's a pattern. See, they have always been doing so because if they can't get along, so they can the better of the Indian security forces. So they find the soft targets, and which are the civilian areas and civilian targets which they have been targeting, and they have done this time as well. So this is, as I said, a desperate attempt by Pakistan, because they see that the situation is from them very fast, because Jammu and Kashmir has already become normal, and they feel if they can't create turbulence there, they feel that this Union territory is fast returning to normalcy with various elections that have taken place. The region is giving a resemblance of normalcy, and that's why Pakistan is desperate to create some sort of turbulence, because it realizes that it will lose the argument if things become normal, and that's why this desperate attempt we are seeing from Pakistan. Mr. Bansal, what we do know, as also suggested by these visuals, there's a very thick smoke, and you know that Pakistani army bunkers have also been demolished. These are very dramatic visuals. Pakistani army bunkers have been demolished. Their fuel dumps have been demolished. Their launch pads have been demolished along this Karen line. See, that's what I said. The Indian security forces have now shown them that we will give you a befitting reply well across the line of control. And this is what is the clearest manifestation of this, that we have destroyed those important targets which needed to be destroyed from where these various infiltration bids have been coming. And these were the ammunition dumps, fuel dumps are the ones which were actually providing sustenance to these troops. So I think by destroying them,